जहाँ भी कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी उसका वो कनेक्शन बन जाएगा ब्रांड के साथ। और अगर किसी ब्रांड का कोई एसेंस, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कस्टमर्स कांट रिलेट टू इट। यू डोंट गिव अप एंड यू आर ओके विद द नोस दैट यू रिसीव। अगर 100 में से आपको 90% लोग अगर आपको ना कर रहे हैं, सो इट्स ओके। आई मीन, यू डोंट लूज द मोटिवेशन। 99% लोग आपको हमेशा फीड करेंगे फियर के ऊपर, कोई आपको होप के ऊपर फीड नहीं करेगा। जब आप कहते हो कि नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है या ये अलाउ नहीं करेगा मुझे, ये ऐसे, आप जैसी आदत डालते हो लोगों को वैसी ही आदत पड़ती है। मेरे अगर 10 फेलियर्स लिखे हुए हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए, यू विल सेलिब्रेट ईच ऑफ योर फेलियर। यू गो थ्रू फेलियर्स एज क्विकली एज पॉसिबल टू गेट टू द सक्सेस। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by FutureFest. Today we have a guest with us. She has done her master's from Kinnaid and she started her new startup in 2022, and after that, mashallah, that platform has got a very immaculate success, and it's the fastest growing parenting e-commerce platform in Pakistan, Nani.pk. She's the founder and CEO of Nani.pk, Bushra Latif. Assalamu alaikum Bushra, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you so much for having me here. Likewise, we are grateful and thankful to you. You have taken out the time from your busy routine and obviously coming all the way from your home and taking out time, especially on Sunday. It's हर बंदे का दिल करता है वो रेस्ट करे. खैर, thank you very much. बुशरा, बताएं हमें सबसे पहले अपने बारे में. Who is Bushra Latif and where did the journey started from, the educational, the family background, and you have a lot to tell. So basically, I'm from Dera Ismail Khan. It's a small district in KPK. It's quite remote area. I'm from a proper feudal political family. I'm from a Pathan family actually. So it took a lot of conditioning to be where I am right now. And I had major part of my education from there. I did my O-levels. FSC, pre-medical. I have a very diverse background. So I'm that sort of a person. First I was into, medical studies, and then I shifted into political sciences, and then I did my master's in English literature. And it's only later on I opted for data analytics, and that's how I learned about technology as well and got into marketing and sales and all of that. Yeah, that is good. So you did your initial schooling and education in initial schooling in college from Dera Ismail Khan, and then it's later on I went for masters. So how did you decided to do masters in Kinnaid? So basically I wanted to do business. Like I wanted to do an MBA instead, but my mother was very, very adamant about the fact that you should go for literature. But to be honest, I think it was a good decision because literature kind of opens up your mind. Literature is life in itself. It tells you about history, about philosophy, about culture, about everything. Yeah, that's good. That's good. So it was decided before you was about to start any business that one day you, after completing your educational studies, you will get into business. So basically the thing is, you look around, nobody is exactly doing what they had their degree in, right? And it's always the passion that drives you to do something. So as a child, I was always very, very excited about having something of my own and building my own name and, doing something valuable in life. So I think that kind of drove me in this direction. And coming from that background, coming from that sort of family, I couldn't work in a corporate structure or I couldn't work anywhere else. Because startup ecosystem, it's small and it's very posh, like you have educated people around you. So it's comfortable and easier to work in that environment. There are two type of things normally. या इंसान वो करता है जो सबसे अच्छा होता है या जो कामयाब होता है या जो that role model जो होता है वो करता है. या sometimes the other part is this कि जो आपका दिल जो कहता है वो करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट जो होता है वो करना चाहिए. What do you prefer? नहीं, आई थिंक जो आपका इंटरेस्ट होता है अल्टीमेटली आपको करना वही पड़ता है. और आप करते वही हैं, आप पैशन की तरफ ही ड्रिवन भी होते हैं बिकॉज यू नीड टू लव व्हाट यू डू. दैट काइंड ऑफ helps you wake up in the morning.
अगर आपको अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा तो फिर आप वो नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम तक. So that's why I kept on, like changing my field. Yeah, true. But in order to find out, what exactly you are best in it, because definitely अगर आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो what I think is this कि स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैशन. अगर हाँ. आपका पैशन नहीं है और just for the sake you have done an research and R&D, will this thing it gets to started, इसको start कर लेते हैं, तो that does not ये इसीलिए जो है स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं eventually. So basically the thing is when you talk about technology, उसमें होता ही है कि even when we talk about startups, उनकी इतनी hyper growth इसलिए होती है, that's why I chose a technology driven business, with the fact that it's like multiplication बहुत जल्दी होती है चीज़ों की उसमें शुरू में. exactly. So it's like lesser time, और मुझे I don't know हर वक्त लगता है कि मैं लेट हूँ ज़िंदगी में. So I am that impatient person. So that's why I chose this technology business, or especially this segment, कि वो multiplication जल्दी हो, and I reach at a certain point in like, less time compared to a conventional business. Bushra, tell us one thing. According to you, why do 98% of startups fail, when they start? It's a very interesting question actually. Basically, या तो market वो गैप होता नहीं है जो वो एड्रेस कर रहे होते हैं, या तो वो टाइम सही नहीं होता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी वो दोनों चीज़ें होती हैं एंड लक इज़ नॉट बाय योर साइड. सो इट्स लाइक it's like luck and hard work they come hand in hand. You need to be in the goal securing position, and that is where when luck strikes you. So basically it's like through hard work, through team. ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक ये कल्चर भी है कि दे लाइक ओके, अगर ये बंदा बाहर का पढ़ा हुआ है, इसकी ये पर्टिकुलर डिग्री है तो ये कर लेगा, और जो बंदा मतलब जिसके पास वो डिग्री नहीं है, फॉर एग्जांपल लाइक आई डिड नॉट हैव अ टेक बैकग्राउंड बट आई एम बिल्डिंग अ टेक प्रोडक्ट एंड वन ऑफ इट्स काइंड. सो आई थिंक वो जो फाउंडर में जो पैशन होता है, that is the most important thing. Somebody who never gives up. True. So like they say that, like universe falls in love with a stubborn heart. So I just live by that. So I think ये चीज़ें भी होती हैं, और obviously founder का वो passion आपको I think notice करना, even the like the investors, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो खुद कितना excited है अपने startup को लेके. So what do you think, what is the formula according to you behind the success or behind the success of a startup? So basically जब मैं choose कर रही थी कि मैं किस segment पे काम करूँ, I had 3 ideas to work on. I chose the childcare market because ये price sensitive नहीं थी. It was like very risk averse. Even हमारा जो model है, that is also very risk averse. We don't stock anything. प्लस ये जो मार्केट है, बच्चे पैदा होंगे और बिजनेस चलता रहेगा. बिल्कुल. और पाकिस्तान में अराउंड लाइक 19,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं. सो दैट सेगमेंट हैज़ टू गो ऑन. इट्स नॉट प्राइस सेंसिटिव बिकॉज पेरेंट्स अपने ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने बच्चे की चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक पर्टिकुलर इस तरह की नीश के लिए भी इट्स, क्योंकि देखें 2021 में थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. मनी वॉज फ्लोइंग, क्रेजी इन्वेस्टमेंट्स वर रेज्ड. अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग. सो अभी वही स्टार्टअप्स जो हैं या वही बिजनेसेस जो हैं वो सर्वाइव करेंगे जो बेसिक नेसेसिटी है. सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट द टाइमिंग ऑफ द मार्केट देन इट्स कि आप बिजनेस क्या चूज़ कर रहे हैं. इज़ द मार्केट प्रिपेयर्ड फॉर इट? How important does a team plays a role in the success of a startup? आई थिंक टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू नीड एग्जीक्यूशनर. और ये लाइक बीइंग अ फाउंडर, कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस का बंदा स्टार्टअप्स में नहीं काम कर सकता बिकॉज उनका माइंड सेट बहुत डिफरेंट होता है. वेयर एज व्हेन वी वर्क इन स्टार्टअप्स वी वेयर डिफरेंट हैट्स. Like there was a time I was handling marketing, I was handling sales as well. So it's like, I was doing the finance part as well और सारा. तो startups में ये नहीं होता कि मुझे नहीं आता. You have to learn and do it. There's like, you have to solve that problem if, something comes up.
तो स्टार्टअप के जो वो प्लेयर्स होते हैं, ईच मेंबर ऑफ द टीम हैज़ टू बी अ प्लेयर. They have to do more than what is required. So I, as a founder, kind of like, I also like try to push them to their boundaries where उनकी growth हो. So जब वो आप boundaries के नज़दीक आप push होते हैं, तभी आपकी growth भी होती है. ट्रू, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, कमिंग बैक टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग parenting e-commerce platform in Pakistan, how did this idea generated in your mind initially? कहाँ से वो पहला दिन जहाँ से start हुआ? So basically, since I was from Dera Ismail Khan, and it's a tier 3 city, you can say, I used to notice mothers around me, especially like my sister, who is a mother of 3, and then my sister-in-law, who is a mother of 2 now. I used to see there was a lot of frustration in them because bada motherhood ki jo journey है, it's very difficult. It's like, bringing up 3 children together is not easy. It's like you can't find time for yourself at all. So वो आप इतना उसमें immerse हो जाते हो कि you forget yourself, and as a person आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो. So it's like you can only pour from a full glass, right? तो एक तो वो चीज़ मैंने नोटिस की कि कन्वीनियंस कोई नहीं दे रहा था मदर्स को, क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट है और यहाँ इतने postpartum depression, and there are a lot of things. Like I used to come across the news कि जी एक new mother ने suicide कर ली because of postpartum depression. And because people find it hard to find support, and they need to relate to each other, especially जो mothers हैं. So has to be a community जहाँ वो बात कर सकें अपनी जैसी mothers से, ताकि वो relate कर सकें, and they feel okay कि okay, that's not the only problem that it's not with me, but it's with every other mother out there. एक तो ये चीज़, और दूसरा ये था कि it was so difficult to source something as basic as a formula in Dera Ismail Khan, and the only resort was bulk buying. So आप सोचें कि अगर रात को दूध ख़त्म हो गया है तो आप क्या करेंगे? I mean, वो बच्चा तो आपको पता है एक अलार्म है, वो तो चीखने लग जाएगा अगर उसको चीज़ नहीं मिली. So it's like हम लोगों को literally we had to call somebody in Lahore कि जी हमें वो लेके दें, वो bulk buy करके हमें भेजें and all of that. तो वहाँ से I was like, oh my God, it's a $8.5 billion market. Why isn't a big player in sight already? Nobody is covering this market gap. I was like, this is the thing I'm gonna do. So because obviously, like I said, कि वो price sensitive भी नहीं है model. So that's why I chose to do Nani.pk. Definitely, when you started, this market was untapped. ठीक हो गया, आपके लिए एक अनटैप्ड मार्केट थी. तो दैट मीन्स कि इस मार्केट के अपने चैलेंजेस भी होते होंगे, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव नहीं है ये, आप सही कहती हैं. लेकिन इन द मीन टाइम अपने बच्चे के लिए अगर इंसान पैसे को नहीं देख रहा, लेकिन इसी तरह वो किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी भी प्रोडक्ट को देखेगा, और जब तक देयर ट्रस्ट फैक्टर मैटर्स अ लॉट, बिकॉज इट्स नॉट इट्स नॉट अ गारमेंट यू बाय, जिसमें पीने की भी चीज़ें, इसमें खाने की भी चीज़ें, इसमें सो मेनी अदर चीज़ें. So यहीं पे तो हम वो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं. That's how we are building the connection with the customer. तो जहाँ भी कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी, उसका वो कनेक्शन बन जाएगा ब्रांड के साथ. और अगर किसी ब्रांड का कोई एसेंस, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कस्टमर्स कांट रिलेट टू इट. सो इसलिए ये जो कम्युनिटी थी, इट वाज टू जेल इन द कस्टमर्स बेसिकली, and to develop that kind of trust and bond between the brand and the customer. So that's how we came about it. चले आइडिया आ गया, it's very good, and you must you feel proud of it, because हम घर में बैठे हुए बहुत बार सोचते हैं, ओह ये वाला आइडिया है यार, मतलब वी कैन स्टार्ट दिस, बट नॉट एवरीबडी डज दैट, एंड नॉट एवरीबडी ऑब्वियसली जो लोग स्टार्ट करते हैं उनमें से वो सक्सीड नहीं होते. देन व्हाट वाज द स्टेप 2? I have always been an executioner. I have always been that person. वो इकबाल कहता है ना कि the punishment of cowardice is death. I live by that. I think do it crying, do it screaming, but you got to be in the arena. That's what I've always lived on. Like, और मुझे लगता है कि आप जितने हार्ड टाइम से गुजरते हैं, आपकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है एज अ पर्सन.
और स्पेशली स्टार्टअप्स में तो I could just tell you there's this 90-degree change in my own personality since the year I started and where I am right now. So it's a personal development journey as well. It's not just that you're developing the business, but it's your personal development journey as well. How did you manage to pull all the vendors, under one umbrella? How was it? Is it difficult? कैसे किया? उसकी क्या planning थी? Who helped you? Obviously, एक खातून एक platform शुरू कर रही है एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी के अंदर जहाँ पे वी मेल्स आर वेरी वेल कनेक्टेड, हमें पता होता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर इट्स नॉट ईजी फॉर वुमेन टू डू अ स्टार्टअप एंड देन उसकी चैलेंजेस भी होते हैं. Then how did you bring all this thing in under one umbrella? It is a very interesting question, in fact, because it's when you say it's not easy for a woman, I would say it's not even easy for a man to do that. Yes. I know a lot of people who wanted to run a business like Nani does, and they failed to do so. Because यहाँ पे बहुत conventional businesses हैं, even when it comes to, like childcare industry. तो उन्हें समझ नहीं आती, उनको ये बात समझाना कि जी आप प्लेटफॉर्म पे आएँ, उनको हम फूड पांडा की एग्जाम्पल देते थे एंड तो मतलब बहुत मुश्किल था, इनिशियली बहुत मुश्किल था, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप एज वेल. बट वो जो एक बात है ना कि यू डोंट गिव अप एंड यू आर ओके विद द नोज दैट यू रिसीव. अगर 100 में से आपको 90% लोग अगर आपको ना कर रहे हैं, so it's okay. I mean, you don't lose the motivation. बिल्कुल. So I think that there was something that just kept me going. और जब आप give up नहीं करते, so people ultimately see the value in you. And वो जो resilience वो देखते हैं, they're like, okay, there's something going on here. Let's try that. सही है जी. अब जब चल पड़ा तो फिर अब तो everybody wants to become part of it और सब help भी करना शुरू हो जाते हैं. Since you say the idea came, it's a tier 3 city where do you belong from. Please tell us what is the percentage of, of your business कि कहाँ से ज़्यादा orders आते हैं, on those cities in terms of percentage आप बताएं. So basically, whenever I talk to any investor or whenever I talk to any stakeholder from the startup ecosystem, they tell me, okay, KLI is the thing, यहीं पे spending power है, यहीं लोग आई थिंक टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसमेंट यहीं से होती है एंड ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट आई केप्ट ऑन हियरिंग. क्योंकि मैंने जिस वजह से बिजनेस स्टार्ट किया था, व्हाई आई स्टार्टेड Nani.pk, तो nothing makes me more happy than the fact कि 58% of the orders come from tier 2 and tier 3 cities. और वहाँ पे हमारे amazing customers हैं. The customers who kind of like hook up और वो digital payments हमें कर रहे होते हैं और सब कुछ हमारे से buy कर रहे होते हैं. So we do give them the priority as well. So that way we found the market fit. The initial idea of why Nani.pk actually started. Definitely those are the potential buyers because, me being in the service industry from a long time now, I do understand that and I have seen the stats as well कि, KLI में ठीक है लोगों के पास पैसा है बट उनके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. जो ये वाली कम्युनिटी है और जो ये वाली टायर है, जो ये वाले शहर हैं, इनके पास इतने ऑप्शंस भी नहीं आते एंड इनकी स्पेंडिंग पावर भी बहुत अच्छी है बट द थिंग इज कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ वहाँ पे वो मार्केट गैप है. और हमारे लिए जो यहाँ पे बैठ के हम कारोबार कर रहे होते हैं, हमारे लिए ऑप्शन अच्छे हैं कि आपका जिस तरह 58% के ऑर्डर्स वहाँ से आ रहे हैं, इन द सेम वे वहाँ से पेमेंट्स भी एडवांस आ रही है. एग्जैक्टली. तो why not name related to mother? What is this Nani concept? So basically, we went through the whole branding exercise. It was first called Kiddo, and then we later on chose the name Nani. Basically, the brand vision, and that's the amalgamation of contemporary knowledge and the old world wisdom. Since we millennials, like I myself, we have gone through internet transition. तो बहुत गैप आ गया है बिटवीन हमारी थिंकिंग में और हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग में. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और जो हमारे पेरेंट्स थे उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं आया था, लेकिन क्योंकि हमने इंटरनेट ट्रांजिशन देख ली, हमारी सोच में, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क आ गया है. और अब तो जेनजीज AI की ट्रांजिशन देख रहे हैं, तो आई मीन उनका और ज़्यादा वो गैप आ जाएगा. सो दैट्स बेसिकली वो गैप कवर करने के लिए कि एक जो ट्रेडिशनल नानी है, बिकॉज when you become mother for the first time, आप सबसे ज़्यादा अपनी मदर की एडवाइस लेते हैं
to bring up your child. Yes. So basically, जो traditional nannies हैं, they wouldn't be like, they wouldn't have the kind of knowledge that is required for today. So if I become a mother, I wouldn't ask my mother कि मैं किस school में डालूँ, मैं किस तरह से करूँ, क्या ना करूँ, because हमारी सोच में बहुत gap आ गया है. So that's where the digital nanny comes in. She is a good amalgamation of the old world wisdom. वो एक attach हो गया और आजकल की जो modern knowledge है वो attach हो गई. So that's like the best sweet and sour spot, kind of, yeah. Well, to be honest, when I heard first about, the name is so unique and it's so good, कि mostly एक बच्चा जो होता है वो अपनी नानी से बहुत ज़्यादा अटैच होता है. हर बच्चा अपने दादा दादी वगैरह बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नाना नानी का जो प्यार होता है, मामा मामू खाला होगा, तो that is, that bonding is very good. So does this type of running this type of platform, does it requires any parenting courses or not? Since you are single, you're not married, तो yeah, definitely आपके साथ बहुत सारी माएँ थी ऐसी आपके immediate family में. तो is to run this type of platform, is a parenting course required or not? Have you done it? And if you have done it, please tell us about that. Basically, there has been a long time since I've been working for Nani. It's like I took a year to study this business model and how I am going to run it. It's only since like October 2022 that we had our soft launch. But I was like working way before that for this platform. So obviously I've gone through everything and anything. But even other than that, हमारे different community initiatives हैं. हमारे panel पे different pediatricians हैं. हमारे panel पे different holders हैं when it comes to motherhood. जैसे कि like I was telling you, we launched a tech product called नानी की कहानियाँ. उसका इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया बिकॉज एक तो हमें जब हम कस्टमर्स से रियल टाइम हमें जब कोई क्यूरी आ रही होती है या हम उनसे सुन रहे होते हैं, सो दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्म्स अस कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या आजकल. सो आई थिंक बीइंग अ मदर माई सेल्फ वुडंट हैव हेल्प मी मच, बट जब मैं 30,000 मदर्स की क्वेरीज सुन रही हूँ एंड आई एम स्किमिंग थ्रू डाटा and then I'm coming up with a solution that's more of a practical approach or more practical solution in itself. So basically, what does it offer, Nani, for a parent or for a mother or for a father or for a kid? What exactly does this Nani.pk platform has to offer? So basically, it's a very holistic platform. It has a parent-centric e-commerce marketplace. जहाँ पे we give a platform to all the childcare industry stakeholders. We have, categories starting from grocery to apparel to furniture. I mean, you name it. We sell the, online and offline course tickets and everything that you require as a parent. So basically a household name when it comes to parenting as in general. और हम basically इस niche को highlight कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी manufactured childcare brands हैं. We don't want, cheap चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड. एक तो हमारे मुल्क की इकॉनमी वैसे ही इम्पोर्ट कर करके वो हो गई है. बट अदर देन दैट, वेरी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि देयर लाइक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी ब्रांड्स. उनको भी कोई मार्केट नहीं कर रहा था. आप जैसे देखें जुनैद जमशेद को, उनकी इट्स नोन एज अ वुमेन अपीयरल ब्रांड, बट उनके एक बच्चों की जो लाइन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी लाइक नाइस. नोबडी नोज दैट कि वो बच्चों की लाइन कर रहे हैं. या जैसे लाइम लाइट है, या जैसे हमारे बाकी ब्रांड्स हैं, तो उनको बेसिकली हाईलाइट कोई नहीं कर रहा था. सो दैट्स वेयर नानी कम्स इन. एंड देन वी हैव द कम्युनिटी जिसमें हम लोग we have mothers to kind of like talk to each other and relate to each other and all of that. We have a lot of community initiatives attached to the mothers community. जहाँ पे like I was telling you, we launched नानी के टोटके, we launched नानी की कहानियाँ. All of these were the tech products basically. So हमें different mothers messages करती थी कि okay, we wait till Sunday for the story to come up. और हम वो फिर बच्चे को we love the नानी की कहानियाँ and all of that. और हमें ना इसकी physical book चाहिए. Then we came up with Nani publications. So अभी हमारी first edition is out. So basically, like, since I myself, I'm a millennial, so we had always been exposed to European literature. Like stories based, जैसे आपने भी यही कुछ ही पढ़ा होगा, like stories based in the streets of Europe with their names. We couldn't kind of like relate as kids.
So Nani publication, basically what it does is that it promotes the local literature, local writers, where the stories are based in the streets of Karachi and Lahore and kind of like connect you to your own roots and with your own names, ताकि वो बच्चे एटलीस्ट रिलेट कर सकें और अपने रूट्स जो हैं उसको वो समझ सकें कि what kind of tales are there in हमारी अपनी कंट्री में. So basically that's how नानी की कहानियाँ we launched in, like हमारी उसमें 8 stories हैं. हम उसका एक वो स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान के प्री स्कूल्स में रीडिंग इवेंट्स लॉन्च कर रहे हैं हम उसके. तो क्योंकि बिकॉज हमारे सेगमेंट में भी बेसिकली प्री स्कूलर मदर्स आर आर डायरेक्ट कस्टमर्स. प्लस नानी के टोटके हो गए, द ओल्ड स्कूल रेमेडीज, पीपल लव दैट टू. और शगुफ्ता के मसाइल हैं, वेयर शगुफ्ता इज़ अ मदर बेसिकली, और नानी काइंड ऑफ सॉल्व्स हर प्रॉब्लम. Other than that, we have online webliners with pediatrician, with makeup artist, and you like kind of name it. Well, after having a communication with you regarding the ideas and what sort of effort you're putting in, so I think one of the major reason of the success is this, that it makes your platform is different because it makes you different because you are different person as well. हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम लोग we discuss things, ये भी करना है वो भी करना है. पहले तो डिस्कस नहीं करते लोग, और जो डिस्कस करते हैं उनमें से वो एग्जीक्यूशन नहीं करते. तो माशाल्लाह यू हैव डन एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एज वेल. हाउ डिड यू लर्न अबाउट द ई कॉमर्स? यू हैड द आइडिया, क्योंकि आप सारा काम खुद कर रहे हैं. यू आर द फाउंडर एंड CEO एज वेल. सो दिस इज माई क्वेश्चन, वेयर डिड यू लर्न ई कॉमर्स फ्रॉम, एंड द स्टार्ट्स ऑफ इट, और द हाउ टू रन एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? आई थिंक आप 6 महीने में इतना लर्न कर जाते हैं व्हेन यू पुट योर सेल्फ थ्रू इट, जितना आप शायद 6 सालों में भी अदरवाइज लर्न ना कर सकें. सो आई थिंक आई एम समबडी जो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा काम कर लेती है. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो जब मेरे ऊपर कुछ आ जाता है, आई एम अ क्विक लर्नर, आई लर्न इट. लाइक मुझे फाइनेंस बहुत बुरा लगता था, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी लगती थी शुरू में कि यार पता नहीं क्या है. बट लाइक नाउ आई एम लाइक गुड, आई कैन क्रिएट अ फाइनेंशियल मॉडल एंड एवरीथिंग. सो इट्स लाइक, आई मीन, you have to be gifted as well with something, and you need to have that passion to learn things as well. So I was somebody who always had a quest for knowledge. So मुझे लगता था एक ज़िंदगी है, उसमें सब करना है मैंने. So I am that sort of a person as well. And just to mention कि हमारे Nani.pk में recently we launched our subscription model. उस पर हमें बहुत अच्छा response आया. It's still at the pilot stage. और वो बेसिकली यू सब्सक्राइब टू इट, और वो बच्चे की ग्रोसरी आपको थ्राइस अ मंथ डिलीवर हो जाएगी वेर एवर यू आर. सो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डाइपरिंग एंड मिल्क. सो लाइक मोस्टली फादर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों की ग्रोसरी लेने में. इफ़ यू योर सेल्फ आर अ फादर यू वुड नो. तो आप सोचें कि आप ऑफिस से आए हैं और आपका बच्चा रो रहा है एंड यू लाइक, ओ माई गॉड, आई फॉरगॉट टू बाय द फॉर्मूला. अब मेरा दिल नहीं है कि मैं दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके जाऊँ और मैं वो लेके आऊँ. So like, look at the kind of convenience it's providing. That's why people are crazily opting for it. Nobody has done that as well. क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा segment है. True, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. देखें, when I look at the data and starts, इसमें स्किन केयर एंड ये और ये पेरेंटिंग जो ये फार्मूलाज वगैरह हैं, इसमें डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ जाती है. हम भूल जाते हैं डेली टू डेली रूटीन में. Exactly. तो बट और एक प्लेटफॉर्म रन करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इटसेल्फ भी ये है कि वी नो दिस, कि अगर एक बच्चे एक माँ ने एक दूध लिया है और वो 10 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो वी हैव टू कीप एन टैप ऑन द डाटा एज वेल, कि वो ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले रिमाइंडर के बाद बिल्कुल. So we are building this really cutting edge technology around it. We are also selling it as a fringe benefit to the corporate clients, where the company subsidizes it for the employee. So I mean, look at the kind of retention it's going to build for the corporate client. क्योंकि आप देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका बच्चा होता है, और अगर कंपनी कोई है वो उसके ग्रोसरी का ख्याल कर रही है, तो यू वुडंट वांट टू लीव दैट कंपनी, राइट? सो उसके अराउंड जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, देयर इज सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर आवर कॉर्पोरेट क्लाइंट, सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर ईच पेरेंट. So basically you can kind of like change the dates, you can change the place where you want to get it delivered and all of that, and you can change the the brand that you want for your baby.
So that is sort of giving a lot of convenience to the parents. But how are you making this thing technology-wise possible? Because the platform which you're using does not allow you to do this. ठीक है Yeah, we're तो custom building it. अच्छा तो बेसिकली जो सारा डाटा है वो आप अपने Shopify के environment से बाहर ले जाके तो then you do a work on it. Yeah. So I was curious to ask that as well because so many brands wants to do this but they're not able to do it because Shopify platform itself has so many restrictions. Yeah, it has a lot of restrictions, but like coding has the ability to change the world. Coding definitely has और I have always been that person क्योंकि जब GPT आया था initially, I wanted whole of my team trained on it. And we readily opted for it. And we were exploring each tool right there and right then. So I've always been a tech enthusiast in a way and an AI enthusiast. And now like I am being the product manager for what I'm building right now. So एक जो बड़ी breakthrough आएगा e-commerce industry में plus ये जो Dawla space ये childcare market है, that's when Nani launches its AI product. So basically, it's going to be a mother for the mummies out there. So basically, it kind of like solves the research problem. So it's like, because voice commerce is also a thing. So we are launching the culturally tuned Urdu AI voice chat booth, जहाँ पे mothers easily अपनी ही ज़बान में they can search the product. ये एक बहुत बड़ा problem है because usually वो housewives होती हैं mothers. और वो tech savvy इतनी नहीं होती. So when this feature is introduced, it will get really easy for them. और आप सोचें, if you're a mother and your mother is no more, we give you somebody to talk to, somebody to share your motherhood journey with and perhaps help you with, shopping as well. तो एक वो जो चीज़ आएगी, उसे हम बहुत extraordinary growth expect कर रहे हैं अपने platform पे. So where is this, your head office of Nani.pk? Where is it based? कहाँ पे? We are based out of Collabs Gulberg. I chose Collabs because it's, I think it's the best co-working space in Lahore. Plus, up to the affiliation भी हो गई है. It's been like 1.5 years since I'm there. That's great. Bini Collabs is one of the best co-working space in Lahore. I do agree with that as well. I used to conduct some of my podcasts over there as well because the management is very friendly. They're good people and I think जो भी start करता है लाहौर में almost वो collabs को जानता ही है as an co-working space. How easy or what was the challenges to find a team, an exact team and right team to hire for this project in the beginning? I think सबसे जो challenging task था as a CEO as well, it's how you build the team. क्योंकि initially आपके पास budget restrictions भी होती हैं because I was bootstrapping it. Or then I opted for young people who I could train. That took a bit of time, but I could like train them according to myself, like how fast I wanted to grow. So Nani.pk kind of like बहुत तेजी से grow किया. It's only been like 11 months और हमारा GMV run rate reached to 36,000 USDT. Plus हमारा CMGR is at 70%. So all of these things, I think, और हमारी जो marketing है, it's like people love what we do at Instagram and, they love the initiatives that we, जो जितने भी हम community initiatives ले रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं. So हमने branding के ऊपर बहुत ज़्यादा focus किया और obviously we wanted that sort of creative team as well. So अभी तक मैं खुद head कर रही हूँ when it comes to the marketing. So I'm the marketing lead as well. We have the designer, we have the social media manager and everything, but the ideation comes from me. So who is doing the research on it? Because I believe एक बंदा बहुत सारे काम तो नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. What is the future of Nani.pk? Who's working on it? And what is the idea behind it? So currently, because we are raising, we have opened our first investment round and alongside we are building AI product as well. So that kind of really keeps me busy. तो अब like obviously हमने hire किया है Plan 9 के एक है Muiz, so he is going to lead the marketing now. So you've been mentioning a lot about the AI product. So please tell us something about that product which you are building and what are the challenges behind building the product and what is the future of that product? So basically
AI पे अब ऑलमोस्ट सब लोग काम कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो फॉर श्योर पीछे रह जाएंगे. हमने बहुत इनिशियली AI को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड दैट्स हाउ वी केम अप with the fact के Nani.pk पे we wanted a culturally tuned Urdu AI voice chat booth. Voice commerce is also a thing nowadays. और हमारा जो segment है mothers का वो ज़रा इतनी tech savvy नहीं होती and उनका ये problem आ रहा होता है. एक तो it solves the major problem of researching the product, for example. So आप बोल रहे हैं आपको प्रोडक्ट उसी वक्त आ रहा है, you don't need to type anything, you don't need to do anything. Other than that, obviously it's, एक तो ये चीज़ सॉल्व हो रही है, दूसरा जो आपका अपना डायलेक्ट है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. Our AI is capable of, capturing different accents. Plus, हम through media of that particular country it's launched in, जो हम pipeline build कर रहे हैं, culturally aware and analysis system जो हम build कर रहे हैं, it's an internationally scalable product. क्योंकि आजकल चैलेंज ये है कि AI तो सब लोग कर रहे हैं बट उसको culturally sensitive किस तरह करना है, that is a major breakthrough that we are going to do. Since हमारी जो industry है it's very emotionally driven, so it needs to be culturally sensitive, how parenting is talked about, how motherhood is talked about in Pakistan. So जब वो चीज़ cover हो जाती है, so you will literally have a mother to talk to. If you become a mother for the first time, you'll have your own, mother to talk to. So basically in your own language. So that is going to build a lot of audience and it's going to build a lot of growth for our platform. Or plus, we would want to then scale Nani to MENAP region. We can tomorrow launch it in Brazil maybe. We just need to attach an e-commerce marketplace along with it, and boom, you won't have the competitors then. Yeah, true, because you are building a platform and platform jo hai, it's a technology driven platform because you believe in technology. So it's technology powered platform, I would say. AI powered, yeah. Yeah, true, AI powered. So the tool which you are building, this AI tool, it will be integrated to your platform. With this particular product, AI product be available outside your platform, or is it integrated to your platform? No, it's going to be obviously on our website. So currently it's going to be on the website with the pull effect only. And later on when we launch our app, it's going to do the pull effect as a push effect as well. So basically तब जो कैप्चरिंग ऑफ वो सेगमेंट होगा या वो जो कस्टमर्स हम कैप्चर कर रहे होंगे वुड बी ईजियर फॉर अस, वे ईजियर. Plus, it's not just B2C, it's going to be a B2B product as well. So like, tomorrow it's going to be a marketing platform for all the childcare industry stakeholders, be it pediatricians, be it preschools, be it industry manufacturers, all of them. So अगर कोई कह रहा है कि मुझे अपने बच्चे की बर्थडे के लिए कपड़े कौन से आप सजेस्ट करती हैं, so we basically what we do is we give a warm lead to the either an influencer की किसी वीडियो पे वो हम ट्रैफिक उधर थ्रो कर देंगे, या फिर हम कोई भी अगर कोई फॉर एग्जांपल मिनी माइनर्स है, उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई है इस तरह की वेयर दे आर ड्रेसिंग अप द चाइल्ड फॉर द बर्थडे, हम उधर थ्रो कर देंगे. सो इमेजिन the finesse in the technology that we opt to bring. When the similar idea we had when we started this series of podcasts, this podcast is also these podcasts will be integrated with AI, because हमने ये देखा कि content तो बन रहा है पर कंटेंट ज़ाया बहुत हो रहा है, मतलब कंटेंट ट्रैश बहुत ज़्यादा हो जाता है. और अगर कंटेंट बना हुआ है तो कब किसको कैसे कंटेंट देखना है, वी नीड टू इंटीग्रेट इट विद द आई. सो it saves the time as well, and the content can be utilized in so many ways. Please tell us, आपकी जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग का क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? सो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो हमारी हो रही है बिकॉज थ्रू कम्युनिटी, थ्रू डिफरेंट कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, बिकॉज पीपल लव दैट, वो जेलिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ से आ रहा है, एंड दैट काइंड ऑफ बिल्ड्स द कनेक्शन विद द
कस्टमर एंड ब्रांड के साथ बेसिकली. और पेड मार्केटिंग भी हम साथ साथ सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग भी हम लोग कर रहे हैं. What are the challenges of logistics when it comes to Nani.pk? Because there are products which there are products which are easier to send through logistics, but आपके कुछ products ऐसे हैं जिसमें challenges आते हैं. तो what are the challenges? बिल्कुल. I think one of the biggest challenge was logistics. So we kept on, because like in startups you do pivot. We kept on trying different logistic companies. Currently हम लोग PostX के साथ हैं, TCS के साथ हैं. So हमें orders इतने remote areas से आते हैं, which is funny, like गिलगित बल्तिस्तान से आ जाएगा या कश्मीर के last part से आ जाएगा. और मैंने जब ये subscription model का LinkedIn पे अपने डाला कि that we launched it as a founder, so I would receive the messages from FATA. Can you believe that? कि आप वहाँ deliver कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. We were like, we are delivering everywhere to every nook and cranny in Pakistan. So अगर कहीं पे कोई logistic company नहीं जा रही, हम पैसे ज़्यादा उस पर लगा देंगे. मतलब वो customer ready भी होते हैं पे करने के लिए, since they know कि बहुत ही remote area है. But हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भी वो चीज़ भेज देते हैं. But we want to make sure कि पाकिस्तान में when it comes to childcare, Nani becomes the household name for it. And I want basically the vision for Nani is that it becomes the, a research engine when it comes to childcare products, like, an Amazon for childcare products. Well, how important is LinkedIn, and what is your experience with the LinkedIn, since you mentioned कि आपने, you mentioned it on the LinkedIn and you started getting messages. What's your take on LinkedIn? I think LinkedIn को पाकिस्तान में लोग उस तरह से यूज़ नहीं करते, अंडर एस्टिमेट करते हैं. Whereas I think LinkedIn is a gold mine, literally. You can reach out to any CEO, any top-notch person in that particular industry through LinkedIn, and people are very, very responsive over there. The problem is people don't know how to build their personal brand. So you have to be very active as a founder, as a startup ecosystem stakeholder on LinkedIn. So for me, LinkedIn is a gold mine. Well, that's great. And so if we speak about the startups, आप क्या समझती हैं कि स्टार्टअप्स के लिए ऐसा क्या हमें करना चाहिए, जो हमारे आइडियाज़ कैसे होने चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी ई-कॉमर्स का क्या उसमें रोल प्ले होता है? इट डिपेंड्स कि आपका जो स्टार्टअप है, इज़ इट टेक्नोलॉजी enabled or is it the technology startup itself? We were tech enabled before, till we planned on launching our AI, and now we are an AI product, an AI startup basically. So coming to it, I think it again depends कि आपका startup है किस किस्म का. Because tech enabled, when I say, because मुझे थोड़ा सा ये होता है कि when I look at India, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमसे IT में बहुत ज़्यादा आगे वो लोग जा चुके हैं, and I want to see कि पाकिस्तान में कुछ बहुत innovative बन रहा हो. So it's like I would want कि सिर्फ tech enabled ना रहें आप, but आप basically a tech startup हो, ताकि वो आप जो innovation ला रहे हो, it kind of like runs your country as well. So उसका ये भी बड़ा effect होता है. और at times when I meet my Indian friends and it feels a bit थोड़ा सा मतलब उस तरह आपको होता है कि यार इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है इनोवेशन में, और हम लोग थोड़ा सा बिकॉज ऑब्वियसली जो सोशल पॉलिटिकल यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हम ऑब्वियसली ज़रा पीछे रह गए हुए हैं. सो आई थिंक एक वो जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप होता है उसमें इनोवेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, एंड यू आर कमिंग अप विथ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. So that kind of drives the economy of your country. Well, we heard about Nani, we heard about you. We would like you to shed some light on women empowerment as well, because you बहुत सारी ख्वातीन को they inspire you, they get inspiration from you, because again it's not easy to start up some business in Pakistan right now, जब हम political climate और economical issues से जा रहे हो. Please tell us something about the women empowerment. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए?
This is very interesting since आजकल people don't want to invest in Pakistan, and I have something to tell them कि जो बंदा पाकिस्तान में business run कर सकता है वो दुनिया में कहीं भी कर सकता है with all the difficulties that you face here. I mean फिर आप कहीं पे भी जाके वो business launch कर सकते हैं जहाँ पे ये सारे problems नहीं होते. But coming back to your question, I think it's not just about the women, but it's more about the person itself, like लड़के भी लड़कियाँ भी हमारी. I think हमारे अंदर जो एक imposter syndrome पाया जाता है Asian community में, वो एक तो हमें बड़ा stop करते हैं. और there's this fear, क्योंकि 99% लोग आपको हमेशा feed करेंगे fear के ऊपर, कोई आपको hope के ऊपर feed नहीं करेगा. So as a founder or as a business owner or somebody, as an innovator, you have to be optimistic about things. Jab everything is going wrong, you're like, no, I can make this right. Ek wo jo self-belief hai. And this is how basically aap jo manifest karte hain, that comes to life as well. There was a time when I used to dream about where I am right now. And I mean, everyone around us is living one of the dream they had like long time back. So ये जो possibility है और जो limitation है हमारे दिमाग में, वो हमें drive करती है towards wherever we go in life. So basically, when your thinking becomes limitless, your life becomes limitless. So it's all in the mind. So आप बेसिकली जब आप कहते हो कि नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है या ये अलाउ नहीं करेगा मुझे, ये ऐसे आप जैसी आदत डालते हो लोगों को वैसी ही आदत पड़ती है. इट्स हु यू आर एंड हाउ मच यू कैन फाइट फॉर. वेल बिल्कुल ये बात आपकी सही है. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट द क्रिटिसिज्म. डेफिनेटली आपने अब जब काम शुरू किया, हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें क्रिटिसिज्म डज कम्स एज वेल इन फ्रंट ऑफ आवर कल्चर. इसका बताएं मुझे. टेल अस समथिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म. Being the only one and being the black sheep of my family, when I started working, I never told anyone I was working or doing this. So abhi bhi a lot of people don't have an idea of what I am building exactly, but they know that kuch kar rahi hai. So initially, obviously, it was very, very tough because people around you as well, जब आप उनसे grow कर जाते हैं, they know the old you. और वो उसी old, आपकी old self के साथ वो comfortable होते हैं. But when you grow as a person, that kind of builds an insecurity and that kind of builds a discomfort उनके अराउंड. सो इसलिए आई थिंक वो जो लोग होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज दे हैव दिस आइडिया ऑफ यू जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है कि नो दिस इज़ नॉट दिस पर्सन आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो आई थिंक विद एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, विद एवरी passing time, you grow as a person and it's fine. I mean, you leave people behind and that's like okay. And criticism, I think आपको थोड़ी, I used to be very thin skinned पहले. I used to take criticism on my heart, but like I said कि जब आप कोई business run करते हैं या कुछ भी out of the box कर रहे होते हैं, कोई value create कर रहे होते हैं, तो you grow as a person as well. So when you grow as a person, आपकी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी थिक स्किन होना, वो सारी चीज़ें साथ साथ ग्रो करती रहती हैं. सो अभी अगर मेरे से कोई पूछे डू आई टेक द क्रिटिसिज्म, नो आई डोंट टेक इट ऑन माई हार्ट, बिकॉज आई हैव अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट स्टफ टू लुक एट एंड आई डोंट इवन हैव टाइम टू काइंड ऑफ लाइक सिट एंड वेन अबाउट बीइंग क्रिटिसाइज्ड. सो आई थिंक वो जो एक पैच होता है आपका व्हेन यू स्टार्ट एंड यू बिकम सक्सेसफुल इन समथिंग, जब वो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, एवरीबडी जस्ट वेलकम्स इट देन. सो वो जर्नी आपको अकेले ही करनी पड़ती है. या बिल्कुल. जब इंसान अब when you get busy and when you are doing so many things and so many good things and when there's a research going on, you don't have time. When you have time, definitely you take things on your heart, otherwise you leave it. Things don't matter as well with time. It doesn't matter as well. I used to take I never took criticism seriously. लेकिन ये कि अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है. Tell us something about the categories of Nani.pk and any
category which you are introducing in future? हम लोग अभी currently तो obviously grocery, apparel, hardware, furniture, different workshops for kids, उनकी tickets कर रहे हैं हम लोग. हमारा अपना product launch हुआ है नानी की कहानियों की first edition, that we are doing. We are also doing educational toys and toys otherwise. Plus we plan on launching our own apparel lines, which would be like नानी की अपनी lines होंगी. So that we plan on launching. और other than that हम लोग अब B2B की तरफ we are going to become the review channel for the childcare industry products. Well, that is great. We wish you best of the luck. Yeah, you're doing good, great. And the good thing is this, that you're not stopping. There's no stopping for Bushra Latif and Nanis as well. You keep growing. If there is any message you would like to send to the youth, to the mothers, anybody, here is the chance to say something about that. I would want to say to the youth, abhi recently I had an online webliner with students from city school A levels, and I could see the enthusiasm in them that they wanted to learn about how startup ecosystem works and how startups work, which is very, very interesting. It reminded me of my time when I used to be so impatient to grow up and do something valuable. So I think conventional education system में obviously हमें वो नहीं सिखाया जाता जो हम practically आके सीखते हैं. So I would want to tell them that believe in yourself and just do it crying and do it weeping and do it scared, but do it. You get yourself in the arena and see what happens. Even if you fail, ये बड़ा एक concept है, people are scared of failures. जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मेरे अगर 10 failures लिखे हुए हैं success तक पहुंचने के लिए, so you will celebrate each of your failure. You go through failures as quickly as possible to get to the success. So ये बात जब समझ में आ जाती है, then you're not scared. Then that वो जो एक part होता है आपका डर का, वो ख़त्म हो जाता है. तो वो ख़त्म हो जाएगा तो I think we'll see more people coming in. True, I agree. People are, we face of failures. Actually, I think जितने आप evaluation कर सकते हैं आप evaluation कर लिया करें चीज़ों की, and you should take the decision के कौन सा decision लेना है. Sometimes सोचने में इतनी देर ना लगा दें कि वो time गुजर जाए. Well, it was nice talking to you, Bushra. Thank you so much for having me. Welcome. We are grateful that you came. Guys, this was Bushra Latif, founder and CEO at Nani.pk. She was speaking about a woman empowerment. She was speaking about AI, her new AI product. We were speaking about the Nani's ke piche idea, Nani ki kahaniyan. There are so many things which are already available. Please do visit Nani.pk and you will find out about Bushra Latif and her idea behind this platform, which is the fastest growing parental e-commerce platform. Thank you very much. Thank you.